Welcome once again, friends. Now the next topic we will see strain. What is strain? In this topic we will see what is stress, what is strain, and types of strain. Okay, so first we will see what is the definition of strain. When a body of elastic material is subjected to load or axial force, then there is a change in dimension. This change in dimension to the original dimension is called as strain, right? And it is denoted by epsilon E. Okay, let's see by example. Consider this is an elastic body. Okay, subjected to tensile force. For better understanding, we will consider this example again. Okay, when we apply tensile force on this body, then consider its original dimension was length L and height H. Okay, length capital L. Now when we apply, as we very well know that when we apply tensile force on this body, this elastic body, then what will be the effect? Its length will get increase and height will get decrease. Let's see. Okay, consider is deformation in this. Okay, now length is what? L plus del L. L plus del L. And height is what? H minus del H. Right? So, what is the definition of strain? When we apply axial force or load on an elastic body, then it will undergoes change in dimension. Okay, this will undergoes change in dimension. This dimension will get changed. This dimension will get changed. Okay, that is length will get increased and height will get decreased. Okay, this body will get undergoes some change in dimension. Okay, this change in dimension to the original dimension. Okay, this change in dimension to the original dimension is called as strain. Okay, mathematically we can write as it is denoted by epsilon. Okay, equal to change in, as we take linear strain, then del L upon L or equal to del H upon H, del H upon H, right? This is called as strain. Okay, now the unit is what? Consider this is all the dimensions are in mm, then change in length is also mm and original length is also in mm. Okay, right? This mm will get cancelled. Okay, now the unit of strain is what? Strain has no unit. Okay, write in bold letter
और कैपिटल लेटर स्ट्रेन हैज नो यूनिट. ओके, नो यूनिट. क्या है, जब हम किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सियल फोर्स अप्लाई करते हैं या एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका डायमेंशन चेंज होता है. राइट, उस फोर्स की वजह से उसके डायमेंशंस चेंज होते हैं. ठीक है, तो ये जो डायमेंशंस चेंज हुए उसके ओरिजिनल डायमेंशन से, तो वो क्या है, स्ट्रेन है. तो स्ट्रेन जनरली बेसिकली क्या है, ये एक रेशियो है. किसका रेशियो है, दो लेंथ का, एक चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ. और कई सारे लोग इसको डिफाइन करते हैं स्ट्रेन को कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. दिस इज रॉन्ग. ओके, स्ट्रेन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. ओके, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ वो होता है लीनियर स्ट्रेन. हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के अंदर पढ़ेंगे. राइट, बट स्ट्रेन इज नॉट change in length to the original length only, because there will be change in height also, there will be change in width also, change in diameter also. Okay, these all changes are occur after force apply. Okay, now one question is here कि पहले स्ट्रेन आएगा कि स्ट्रेस. जैसे कि पहले मुर्गा आया कि अंडा, तो पहले स्ट्रेस आया क्या स्ट्रेन आया. वीडियो को पॉज करो और सोचो और आंसर दो कि स्ट्रेन पहले आया या स्ट्रेस. क्या होगा पहले, पहले क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा. इस स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आएगा. फर्स्ट स्ट्रेन कम्स एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस ऑकर. ओके, तो ये कंसेप्ट याद रखना है आपको. इंटरव्यूज के अंदर जनरली ऐसे वाइवास के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी बॉडी के अंदर स्ट्रेन पहले आएगा या स्ट्रेस आएगा. तो पहले स्ट्रेन आएगा. क्यों आएगा स्ट्रेन, जैसे ही लेंथ चेंज हुई, माइक्रोन्स के अंदर भी लेंथ चेंज हुई, तो क्या होगा, स्ट्रेन आएगा. राइट, तो डिफॉर्मेशन के बाद इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होती है, तब जाके स्ट्रेस आता है. लेकिन स्ट्रेन कब आएगा, स्ट्रेन कब बोल सकते हैं हम, जैसे ही चेंज हुआ, दैट इज स्ट्रेन. राइट, ओके, राइट डाउन फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन. व्हेन द बॉडी ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल is subjected to load or axial force, when a body of elastic material is subjected to load or axial force, then there will be change in dimension. This change in dimension to the original dimension is called as strain. This change in dimension to the original dimension is called as strain. Okay. Right. In next line, strain is denoted by epsilon or E. Okay, epsilon. Strain is denoted by epsilon, and mathematically it can be written as first draw these two diagrams, then write this. Mathematically, strain can be written as change in dimension to the original dimension. Okay. Strain is what? Change in dimension upon original dimension. Okay. Write down this two diagram. Then E equal to del L upon L or del H upon H. And in the next line, right? Strain has no units. Strain has no unit. Okay. कई जगह आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेन का यूनिट क्या है. ओके, तो आपको याद रखना है
आप कई बार बोल भी देते आंसर कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, तो आपसे और पूछते हैं कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, तो आप फिर सोचते हैं कि हो सकता होगा, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होता है। इसीलिए इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखो, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। क्यों नहीं है उसका यूनिट? क्योंकि स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ओके, टू सिमिलर पैरामीटर्स, हेंस द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज nothing. Okay, now one important sentence also, okay, first strain comes and because of strain stress occur or stress developed. Okay, first strain comes and because of strain stress occur. Okay, ये सेंटेंस भी लिख दो. Now let's see types of strain. What are the types of strain? First, what? Linear strain. Second is linear strain is also called as longitudinal strain. Linear strain. Okay. Second, lateral strain. And third, volumetric strain. Okay, linear strain or longitudinal strain, lateral strain or volumetric strain. Let's see one by one. First, linear strain, okay, or longitudinal strain. Okay, so what is the definition of this? When a body of an elastic material is subjected to load or axial force, then there is a change in its linear dimension. Okay, change in its length or linear dimension. Then there is a change in length in the direction of applied force. Okay, this change in length to the original length is called as linear strain or longitudinal strain. Okay, जैसे कि हमने देखा जाए एग्जाम्पल लास्ट वाला, जिसके अंदर से क्या होगा, है ना, लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखे, ये ओरिजिनल लेंथ है, कैपिटल एल लिख सकते हैं उसको, चेंज इन लेंथ है एल प्लस डेल एल, तो ये जो है इसे हम कहते हैं लीनियर स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. ओके, डेल एल डिवाइडेड बाय एल, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. ओके, जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सियल फोर्स अप्लाई करते हैं या लोड अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी लेंथ चेंज होती है. कौन से डायरेक्शन में लेंथ चेंज होती है? जिस डायरेक्शन में हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सियल फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट, वी अप्लाई फोर्स ऑन दिस डायरेक्शन. ओके, सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर इज अ चेंज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ दिस अप्लाई फोर्स. ओके, सो दिस चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एज स्ट्रेन, है ना.
जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किए उसी डायरेक्शन के अंदर उसके लेंथ के अंदर चेंज होगा। अगर टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल फोर्स है, तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम बॉडी के ऊपर तो लेंथ क्या होगी उसकी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा लेंथ के अंदर, आइदर इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सो दिस चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, इसको हम और बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेन, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रेन, राइट। इसे लीनियर स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, और प्राइमरी स्ट्रेन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, write down first the definition of linear strain or longitudinal strain. When the body of an elastic material, write down the definition of linear strain or longitudinal strain. When the body of an elastic material is subjected to axial force or load, is subjected to axial force or load, then there is a change in length in the direction of applied force. Then there is a change in the direction of, then there is a change in length in the direction of applied force or load. Full stop. This change in length to the original length, this change in length to the original length is called as linear strain or longitudinal strain. Okay, in the next line, this is also called as primary strain. This is also called as primary strain. Write down this diagram, okay, and the formula of strain. One important thing here, linear strain also classify in two: tensile linear strain or tensile strain, and second, second compressive strain. Okay, second compressive strain. Okay, टेंसाइल स्ट्रेन कब होगा और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कब होगा, जब हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे। टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन रहेगा। ओके, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कब रहेगा, जब इसके ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे। कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, अगर हम इसके ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, if this force change to compressive force, okay, then what will the effect, this height will get increased and length will get decreased. Okay, this L minus del L. Okay, after the application of compressive force, its length will get compressed and height will get increased. Okay, so this is the example of compressive strain. Okay, तो compressive strain क्या रहेगा यहाँ पे, same change in length to the original length, right, but here we observe that the length will get decreased. Okay, यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ कम हुई, है ना, और यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ बढ़ी। ठीक है, this is the basic difference between tensile stress and compressive stress. Okay, understand? कब समझ में आपको कि कब टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा और कब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा, कौन सी लोडिंग अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से कौन सा स्ट्रेन आएगा, है ना। बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे हम आगे जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर और ईयर के अंदर, तो उसमें कंसेप्ट हमको याद रखना जरूरी है कि स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन कब आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, लेटरल स्ट्रेन।
Next is what? Lateral strain. When the body of an elastic material is subjected, when the body of an elastic material is subjected to axial force or load, then there is a change in its lateral dimensions. Okay, this change in lateral dimension to the original dimension is called as lateral strain. Okay, this lateral dimensions is what? Lateral dimensions for, consider for rectangular bar, for rectangular member, for rectangular bar or member. Okay, this dimension, lateral dimension is what? Right, this is a simple rectangular bar. Okay, this is a rectangular bar or member. Okay, here is the width as we indicate B, and here this is the height or thickness. Okay, height or thickness, right? So is the dimensions as, okay, is a thickness, okay, is a width, right? Width of the rectangular bar. Okay, its top surface, bottom surface, top surface, side surfaces. Okay, and this is the front surface. This is the width, right? Okay, so the change in its lateral dimensions. Lateral dimension is what? Thickness and width, right? Or height and width. Okay, so lateral strain is what? Change in lateral dimension to the original dimension. Change in lateral dimension to the original lateral dimension. Lateral dimension. Okay, here lateral dimension is what? This del B upon B, yeah, del T upon T. Okay, this change in width to the original width, this change in thickness to the original thickness, these are the lateral changes, okay, of the rectangular bar. So this lateral change or this lateral dimension change to the original lateral dimension is called as lateral strain, right? For rectangular bar, it may be, for rectangular bar, for circular bar, right? There will be a circular section. Okay, this is the circular section, right? Here you can assume this. Original, that is the cross section. In this case, lateral dimension is what? The change in its diameter. Okay, this is its diameter.
right, is what? Its diameter d. Okay, this change in its diameter to the original diameter is called as lateral strain, right? So write down one by one first the definition of lateral strain. Write down the definition of lateral strain first. Okay. Lateral strain, when the body of an elastic material is subjected to axial force or load. When the body of an elastic material is subjected to axial force or load, then there is a change in its lateral dimensions. Then there is a change in its lateral dimensions, okay, in the direction of load or force, or in the direction of apply load or force. This change in lateral dimensions to the original dimensions is called as lateral strain. Okay, this change in lateral dimensions to the original dimensions is called as lateral strain. Okay, write this formula. Lateral strain. Lateral strain is changing the lateral dimension to the original lateral dimension. Okay. Then write first case for rectangular bar or member. Draw this diagram. Then after these two formulas, where, and also write where this B is original width, and del B is what? Change in width. Okay, change in width, right? Change in width. And T and del T is what? T is original thickness, and del T is what? Change in original change in thickness, Here first draw this diagram, and thereafter write where B is original width, del B is change in width, and all. Then formula of lateral strain equal to del B upon B or del T upon T. Write separately. Okay, del B upon B or equal to del T upon T. Okay, now the next, or the second case, B, for circular bar or member, draw this diagram, right, where D is diameter, where you can write here where D is original diameter, and del D is what? Change in diameter, Okay, so then write this formula. Okay, now next strain is what? Volumetric strain. Okay, let's see.
First definition of volumetric strain. When the body of an elastic material is subjected to axial force or load on its faces. Okay, when a body of an elastic material is subjected to axial force or load on its faces, then there is a change in its volume. This change in volume to the original volume is called as volumetric strain. Okay, this change in volume to the original volume is called as strain, right? When we apply जब हम फेसेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट्स फेसेस, ओके, देन इसकी वजह से क्या होगा, उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, इट्स वॉल्यूम विल गेट चेंज. सो दिस change in volume to its original volume is called as volumetric strain, and it is denoted by EV. Okay, so first write down definition of volumetric strain and formula. EV equal to change in volume to the original volume. Okay, definition. Right, when the body of an elastic material is subjected, जब हम किसी बॉडी के अंदर कोई इलास्टिक बॉडी है, उसके ऊपर उसके फेसेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं. कहाँ पे, ये फेसेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका लेंथ चेंज नहीं होता है, या सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट चेंज नहीं होती है, या सिर्फ और सिर्फ उसके विड्थ और थिकनेस चेंज नहीं होती है. ओके, उसका वॉल्यूम चेंज होता है. ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. राइट, जो फेसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम होगा, ये वॉल्यूम क्या रहेगा, पूरा ओवरऑल जो ओरिजिनल वॉल्यूम से रहेगा वो रहेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. फर्स्ट, when the body of an elastic material is subjected to axial load or force on its faces, then there is a change in its volume. This change in volume to the original volume is called as volumetric strain. Okay, write down this formula. It is denoted by EV. Volumetric strain is denoted by EV, and the formula change in volume to the original volume. Okay, it has no unit. Right, this the basic observation is here in volumetric strain. The algebraic sum, okay, the algebraic summation of linear strains or longitudinal strain is volumetric strain. Write down a sentence here. Volumetric strain is the algebraic sum of all linear strains. Okay, volumetric strain is the algebraic sum of all linear strain. Okay, ठीक है. Linear dimension, linear strain or longitudinal is also called as primary strain, and the lateral strain is also called as secondary strain. Right here also in that section, secondary strain. Okay, because here primary
strain. Linear strain or longitudinal strain is primary strain, and lateral strain is secondary strain. So generally, these two strains are occur, primary strain and secondary strain. Okay. So